एकदम से टेक्निकल चीजें यहाँ पर पड़ी हुई है, सब पढ़ के आई थी, बट थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा मैं आपसे बोल दूं क्या कि कुछ टेक्निकल पूछ लो। मुझे पता था कि यार श्रुति को अपने रिज्यूमे पे सुपर कॉन्फिडेंस है, वो मैंने देख लिया था। मुझे एक एक्सपीरियंस मिल गया, मुझे लिटरली मैं बता रही हूँ 30 मिनट मैंने बोल दिया, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं सरवाइव कर पाऊंगी। कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू में, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, लाइक आप कुछ प्लान आउट करके जाते हो, कुछ होता है। दूसरी चीज, नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर टेल। हेलो श्रुति, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू? फाइन सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। Okay, Shruti. Shruti, welcome to this interview. I want you to take 2.5 minutes something, and I want you to express yourself and express your complete, engineering journey in 2.5 minutes. Please begin. Okay sir. My name is Shruti Gulati. I did my schooling from Wesley Convent School. Currently, I am pursuing my bachelor's degree from United College of Engineering and Research. My current CGPA is 8.8 and my stream is computer science. I'm quite inclined towards coding and programming. I like to code in C++. Along with this, I have also done some certification from Coursera in C, HTML, data structures and algorithm, and JavaScript. While coding and solving different questions, I have found that I'm a good problem solver, and I can come up with efficient solution of different problems. I have been part of organizing different college events also, which has resulted in cultivating team leadership quality, team management quality in myself. Um, I have been recently selected in Super Coder batch of code question, where I'll be learning full stack development in next 3 months, in which I'll be having my hands-on live project also. I have chosen computer science because I was always interested in computers, how exactly it's working, what is the inner functionality through which with one click I can search anything on Google, and all these fascinated me, and which is why I have chosen this stream. I also believe that one should always keep their body fit, which will eventually lead to a healthy mind, and that is why I keep myself physically active by involving in different physical games like badminton, volleyball, and even working out. I also like reading books, and that's it. Thank you for giving me the opportunity to explain myself. Okay, Shruti. One very basic question I wanted to ask you. Right, in your work experience, you have written that currently you are a campus ambassador at Tata Consultancy Services, and you are Yes. also doing an internship at Code Quotient. And as I can Yes. see that these are two different companies, and currently you are doing you are providing your services to two different companies, Okay. Yes, in code question, it is type of an in training that I'm doing. So I'm not bonded in with any terms and condition of that company. But in TCS, I am just an campus ambassador through which I am servicing them by circulating different projects they are coming up with. So there was no bond in both of them, and they were of different genres. So that is why I joined. being an HR of TCS, I just want to ask you, like, how you can give us a assurity that while working with TCS, you won't be associated or you won't be devoting time towards the development of some other organization. Um, First of all, before joining the company, we all know that I'll be signing a bond. So I will be in a particular bond, and I'll make sure that I will never break it, because I am a person of my words. I don't generally get come break my promises, and it was just in training, and that is why I've taken it. Otherwise, I would have never. Okay. And it is a type of part-time also. If it would be a full-time, I won't be joining any of the company. Okay, cool enough.
I just want to ask you one thing while introducing yourself, in which you took 3 minutes and 12 seconds actually, but it doesn't matter. I just want to ask you one thing, that you said you are inclined towards computer science and you want to know the technicalities of the things which are working around us, right? So, why haven't you thought of pursuing masters in technology and PhD in computer science? I have thought about it also. After gaining some interest, you can say experience in this field by taking job and working in this tech IT industry for 2 to 3 years, I would like to switch to my masters also, or maybe I'm planning to with my job. I'm also planning to pursue my higher studies. But Shruti, I am investing my very valuable time on you. My time has a value. So I doesn't see many sense of selecting you for 2 years, because after that you are going to ditch our company and join masters. In second point, I mentioned that I will be, you know, both in hand. I'll do it. I'll work for the company, and at the same time, I want to pursue through distance learning programs. There are But many distance learning one programs. one more thing I would like to say, that on a daily basis, I conduct around 20 to 30 interviews daily, and I have been given a strict responsibility of selecting 2 to 3 candidates among them. So why would I prefer you? Because you are gonna devote some of your time to other things as well. And there are many candidates who are willing to devote their entire time, entire energy to TCS. Sir, if I only know Java, or you can say, let's take an example, I only know HTML and I'm working on this. And for 2 years also, I'm just learning HTML and I'm working. I don't have any knowledge of any of the other back end or front end or CCSS. Don't you think after 2 years my worth will decrease? So it is good that I am working for the company, as well as I'm devoting some time to increase my skills, which will eventually help me to increase the project qualities of the company. But most of the students, what they do, they complete their masters, they gain entire knowledge base, and after that they come to serve the company. Because if you feel that your knowledge base is not that good, you may be harmful for the company, because without appropriate knowledge, it can lead to dysfunctionalities as well in our company. So there is, I think, on nobody can say I'm full with knowledge. Every time we have some scope to learn. So I think right now I'm eligible for this company, but later on I want to enhance my knowledge. So I think there'll be no point in my life or anybody that will he or she can say, yeah, I'm totally eligible for this job. Everyone will learn something or other to enhance their knowledge. And one more thing, you have mentioned that you have a deep interest in knowing the background mechanism of how things work. Coding is one way to judge it, but the other way is also about learning subjects like microprocessors, operating systems, learning about Yes. how things actually work, the actual mechanism behind coding, behind high level languages. But in your resume, nowhere it is mentioned that you have uh, a deep interest in operating systems and microprocessors, like subjects which are hardware oriented subjects. I kind of had the no. I don't want to go hardware stuff. I want to have the knowledge of software stuff, and that is why I have taken this stream. And I don't have much interest in the hardware functionality. I have no. I want to learn software stuff. Okay. You have mentioned that you have a CGP of 8.8. I guess this is an aggregate of 7 semesters, if I'm not wrong, or 6 semesters. Yes. No, 6 semesters. 6 semesters. So, in which semester you scored highest marks and how much? Recently in 6 semester, I have scored highest marks, and that is 90%. 90%. Okay. So, can you please name me the subjects of your 6 semesters? Okay, sir. The subjects were big data, computer networks. Then we had web technology. Then we had
extra like non-credit subjects, and they were human values. Okay, so you have scored more than 90%. And which were your favorite subject among all these? Sir, web technology. Web technologies. Okay. I just want to give you a situation. What was the need of web technologies actually? Because if we compare before, web technologies, still the time was going on, still people were living. So what was the actual need of web technologies? Can you please brief it about it and what you have Uh, learned in that subject basically? Sir, I think it is a is what was a subject designed to increase the make user friendly applications through computers, so that every individual can use can do any stuff by sitting at their home only, to make it user friendly. Basically, the concept was there, and I have learned many different things about like no, sorry, HTML, CSS, and how we have to connect everything with JavaScript. So these were the basic technology taught in the subject. Theoretically, it was a subject, no practical. And one more thing I just want to ask you, like you have mentioned in your senior secondary school, then you have mentioned May 2016 to May 2018. So have you taken 2 years to complete your 12th? Is that so? No, sir. It was a duration actually. While making Okay, so resume, you they might have asked to. mentioned 11th and 12th combined. Yes. Okay, got it. And one more thing I want to ask you, could you please tell us something about your projects which you have mentioned in bit detail? I'm currently working on a project that is hostel management system. That is my final year project. It basics aim is to automate all the functionality done by human beings, like generating bills, booking room of the students, and then making. And there'll be two users. Like we can enter that the application through user and admin. So admin will have control over all the data of the students, and user will have, with the help of user application, we can book different rooms. So I'm the leader of this project. It has 4 members in it, and I was responsible for the front end and analyzing different data and applications of that project. How is it different from Oyo app? Uh, it's different from Oyo app because we are focusing mainly on it is somewhat similar. We have taken ideas from that app only, but it is our own app, and we are mainly focusing on particular hostel. That's it, not different hotel Okay, rooms. one more thing. As I can see your projects, these are the areas where already lot of youth and our country is already working on them, right? So why haven't you as an individual not thought of solving a problem or a crisis which is currently, our country is facing, suppose in while working with TCS you develop something very amazing which is of very use to a country, so your name as well as our organization's name will grow in that particular case. So all your three projects are good, which is very commendable thing, but I cannot find anything unique in your projects which or you are trying to solve any problem which is not yet solved. So while learning, I made basic projects, but I totally agree with your point, and that is why I've enrolled myself in this 3 months training, in which by the end I'll have different backend knowledge also. Currently, I don't have backend knowledge, and without backend knowledge, it is not possible to make something very unique and beneficial for the for my society. So I've enrolled myself, and in maybe in next 4 months, I'll be making up something that will be eventually very helpful for the society purpose also. Okay, great. Just one more thing I just want to ask you. You are aspiring to become a member of TCS. So can you please tell me the tagline which we follow as a TCSer?
Uh, believe, uh, I don't exactly know the tagline, but I remember one word, that there is two word and one is believe, and that's it. No, So it's I don't know. experience certainty. Not a problem. One more thing I want to ask you, in your position and responsibilities, you have mentioned that you are a co-founder of Bring Up Education, and its aim is to provide education to everyone at reasonable prices. So I Yes. just want to ask you one thing, like suppose how to convey that. Suppose I am a very rich person, and I can pay up so much. And suppose one of my neighbor is a very poor person who is not capable of paying that much. You have mentioned that it is providing education to everyone at reasonable prices. So can't we make it like this? Can't we add some dynamic pricing to it, like based on your income we can charge you the fees? See, it was a project that basically focuses on poor people only right now. In our college area, we find some places and we have organized different tutors for them. So it's on our, it is in developing phase, and eventually in future we'll add different features, and maybe I'll take your suggestion also. Okay, thank you so much. I just want to ask you one very, very simple, question. Can you please tell me the language which most of the IT companies use? Programming language? Most Yeah, yeah. most of the IT company is currently using Python or Java or C++. These are the three. Sorry, one more JavaScript. This is the four. But I And asked if I the programming rank language which is used by most of the companies. I am not asking about the only programming one, languages. I am asking about the programming okay. language. I think it's Python because it's Python because it's easy to write and there are less syntax. Okay, There so is no in bracket. TCS, which programming language do we use? So Python and Java, Okay, okay. So according to my basically, knowledge. the correct answer is most of the IT companies today use Java as their programming language, and in TCS too, we use Java as our programming language. So I just want to ask you, like you've mentioned, like everything in your technical skills, why not Java? Because I had already learned C++ in second or third semester of my school. So I thought it will be of no use to learn again a language that is, majorly used for programming. And I wanted to go in, implement different data structures and go in competitive programming. So I thought C++ will be a great option. So I went with that. Okay, okay, okay. And Shruti, one more thing, like you might be doing coding and everything. Like, how many hours do you devote to coding? I I'm not very consistent with the coding right now from very few days as I was preparing for all the interviews. Otherwise, I devote at least an hour every day for coding purpose. I try to solve basic if I'm not not able to solve good questions, but I try to devote at least an hour. Okay, so you might be knowing about sorting. You might have, used Yes. sorting somewhere or else. So, which sorting algorithm do you? I'm very sorry. Which sorting algorithm do you use frequently, basically? Uh, Basically, I like to choose merge sort while I'm sorting. First of all, in C++, we have STL libraries, and with that sort function, I'll use it. Otherwise, if I'm asked to implement more code, I like to take merge sort because it's less, time complexity is less. Okay, okay, fair enough. And one more thing, suppose you are given a situation where you have to make a trade-off between time complexity and space complexity. Like either you can save time or you can save space. So which one would you prefer? Would you prefer time more or space more, and why so? Okay, that's a tricky question because both time and space are important. Like with space, money will be there in hand, and time also you can say it is. It has every application should work. I will go with time because I think if a user gets an output immediately, he'll buy my product rather than I'll invest.
he will pay a cost if the services are very quick. So I'll go with time. I will trade off like I will uh, do I'll make sure that time complexity is not Compromise. deprived, and space complexity Okay, I okay, will. yeah. Because see, today space is a cheap quantity, but time is an expensive thing, you know. So if we have an app which consumes about 30 MB of memory, but it solves problem, you know, very slowly. And on the contrary, if I have an app which consumes around 60 to 70 MB of memory, but you know, it solves the problem faster, I'll obviously go for 60 to 70 MB of memory. Very good. You might be knowing about the different features of oops, you know, you have mentioned in your resume. So we have method overloading, we have operator overloading, we have virtual functions, we have function overriding. So all these comes under what category? Means which feature of OOP supports this operator overloading? Said polymorphism. All these features come under polymorphism. So what benefit does polymorphism give us? So all the OOPS concept and polymorphism, it's saving the number of lines. It is helping to reuse the code, and so that is what they are doing, helping to Okay, reuse okay. the code. So is it possible to increment or decrement a pointer variable? No, sir, I don't know the answer, but I think no, because I've already performed some operations on pointer and they were giving errors. So I think no. Okay, so you have mentioned about STL. You know, can you please tell me the full form of STL? Standard template libraries. So they What is are the use of STL in programming? they are inbuilt functions in C++ that helps to helps a coder to save its time basically. Whilst to sort an array, I'll have to write a whole logic of merge or any other sorting. But with the help of STL, I'll just call sort function and I'll do the. So basically, it's to make you lazy, right? Okay. So okay, you have also mentioned about HTML. So HTML has, you know, different heading tags. So how many types of headings can we have in HTML? So we can have 6 heading tags from 1 to 6. And one more thing, see, once I was, you know, doing, I was working on HTML, and I wrote my entire content in body part, as we already do. But, you know, one thing I just suddenly realized that I have to actually have that entire data in the tabular form. So what I did, I created a table, you know, and then again I typed entire data in the table, you know. So, but one of my friend came and suggested me a tag in HTML where the entire body can be converted as a table. Entire data can be directly converted as a table using a single tag. Do you know about that tag? No, sir, I cannot recall that tag. Suppose in It was TCS you have TR tag, I think. suppose in TCS, see, because we have to serve clients, you know, so we cannot say that please give data in tabular form. Client has its own wish, you know, his own wish, so he can give data in any form. But for our convenience, we store data in tabular form. So T body tag, you know, we use. You can just remember it. T body tag is used to convert the entire data into tabular form. You have also mentioned about database management system. So can you please tell something about the ACID properties? Asset properties are generally designed by it is designed beforehand to maintain the consistency of the database, where A stands for atomicity, C stands for consistency, I stands for isolation, and D stands for durability. Okay. So I just want to ask you one very simple question. Suppose, you know, you might have cleared your 12th and after that there were a hell lot of options to choose. Why did you choose engineering? Because I wanted to, as I told you in my introduction, I wanted to know how the functionality of this software and this. So this was the one reason. And second, I wanted to have a professional degree, and BTech provide us. It will eventually transform yourself you into a professional. So I wanted to pursue a professional degree. So that is.
Okay, so in your 11th and 12th, what additional subject you chose? I went for physical education and English. But you were inclined towards computers, so why not computer science? So because at that very moment, I had already three major subjects and I wanted to focus on them so that I can get into a good college. So I made sure that, and then second reason was that it already had too much work. So I wanted to have something related to physical activities also. But I can see that you have scored a 9.2 CGPA in your 10th, and in your 12th it was 79.6 percentage. So why this declination? So as I told you, I was very bad in chemistry. I never thought knew how to do all these molecular formulas. So physics and maths were quite good subjects for me, but I lagged in chemistry. So that is why it's the only reason. And Okay. maybe I didn't perform well. So you are a gold medalist in mathematics Olympiad. So in which Yes. year did you made this achievement? I made this achievement in 2014. In my school level, I was a gold medalist and in Maths Olympiad. In International Mathematics Olympiad, if I'm not wrong. Yes. Okay, okay. And so, which is your favorite mathematics subject? My favorite mathematics subject would be the- there are actually there are many. I'll choose set relations. Set and relations. Very good. So, one more thing I want to ask you, like there are many companies which offer a similar package to TCS. So, why you want to join TCS and not other similar companies? Sir, I have been already a part of TCS team. I remember that once when we had conference for TCS Ambassador program, they all made us feel so homely and they were so professional, the way they were communicating. So this was one of the reason. And then yeah, TCS is an IT expertise in India, so that is why. Okay, so That one was the two very, main very, reasons. very straightforward question which I want to ask, suppose you start working in TCS and I just give you a offer to switch to some company, and this company provides you a good package than TCS as well as an opportunity to do a free MTech which you wanted to do. So would you switch to that company? Uh, It depends. If I am in thesis right now and I feel like what I have learned in these coming years and I'm able to implement it, I'm satisfied with what I am doing, then I won't go, I won't switch. But at the same time, if I feel that I can learn more things, it's not about free MTech program, but if I can learn more things, and obviously the package is good and I'm able to learn good things, I have been offered to work in different good technology that will be helpful for my growth, then I'll switch. So suppose the same offer some company provides right now, you are selected in TCS, you are waiting for your joining, and the same situation is provided right now. So, what would be your, action item in such a case? No sir, I won't switch. If right now I've offered the same package, I won't switch. I'll stick to TCS because it is in my first plan. Okay, okay, okay. Very good. One thing I just want to ask you, I have been waiting since so long. Seeing your resume, it's like, full of coding, mathematics, projects. In your interest, also, you have written learning new skills, reading, coding. I'm a kind of person who loves entertainment, and I am your suppose I am in, and I want my team members to be jolly, to be bit entertaining, so that no pressure is created while working. So, if suppose what can you do to entertain your teammates? Okay, so I'm Punjabi. So you play a very good song, Punjabi song, and I do Bhangra, and I can promise everybody out there will just laugh and they'll have a great time, gala time. Okay, okay, sure, The sure. way I'll dance. Okay, so any one more thing I just want to ask you. Um,
I think I'm not very sure from which place you belong actually. I belong from Prayagraj. Prayagraj, okay. So basically UP and basically North India. So have you ever explored South India? No, sir, I haven't got that chance to explore. Okay, so suppose if Uh, we provide you two joining locations, if we give you choice, that out of North India and South India, you can choose any one. So which would you prefer and why? I'll definitely go with South India because it's I have lived in North India for like 20 years and I would like to explore the South Indian part of India. So that is why I'll go for South India. And then there are many tech good companies and the environment is good in South India also. Both are equally good, but I'll choose South. Okay, okay, Shruti. So any question which you wanna ask us? Sir, I wanted to ask that if I get selected and join TCS, then what will be I learning in the first month of my join? See, it totally depends on two factors. One is the resume which you are submitting and the training modules which you will be given, right? So how you are performing on them and the mock test which you will be conducting on regular basis from home only. And second, it depends on the business requirements of TCS, right? So we cannot promise anything as of now, but we would love to have an employee who has a knowledge base in, everything, basically every sector of computer science. So you have time. So in case you get selected, uh, try to work on different domains, different sectors, explore new possibilities, right? Okay, so Shruti, it was very good talking to you. We will be telling you about your results shortly on your email. Thank you. And हाँ, चलो भाई फॉर्मल हटाओ। अब अपन करते हैं थोड़ा फीडबैक की बात। सबसे पहले तो बताओ भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, सर हाउ वाज। बहुत अच्छा, अच्छा है। उससे पहले ये बताओ, यू नॉलेज गेट से पहले एसोसिएटेड थे क्या, मतलब एनी कोर्सेज और एनीथिंग लाइक दैट, और दिस इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, या मुझसे नहीं कभी सर, पढ़े हो? मैं संजय जैन सर की वीडियोस लाइक बीबीएमएस मैंने उन्हीं से पढ़ा है एंड देन अभी मैंने एक रिसेंटली इन्फोसिस की टेस्ट सीरीज भी ली थी। सो ओके, एंड देन सर इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस टू वॉच इन लाइव तो यूट्यूब कैसा था वीडियोस आपका में देखा है। ओवरऑल, थोड़ा डिटेल में बताओ, लाइक मॉक मॉक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर एकदम से टेक्निकल चीजें यहाँ पर पड़ी हुई है, सब पढ़ के आई थी और फिर एकदम से सब वो था, तो मतलब मुझे भी लगा कि हाँ कैसे बोलूं, पर थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा मैं आपसे बोल दूं क्या कि कुछ टेक्निकल पूछ दो, पर फिर नहीं, यार, मैंने कहा नहीं। दिस इज मैं आपका रिज्यूम देख के समझ गया था कि यार आप हाईली टेक्निकल बंदे हो, राइट? सो कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू में, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, लाइक आप कुछ प्लान आउट करके जाते हो, कुछ होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि यार एटलीस्ट आपको एक एक्सपीरियंस मिला। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी हवा में बोल रहा हूँ, 9 इंटरव्यूज क्रैक किए तो मुझे हाँ एक्सपीरियंस है। तो वही। कुछ भी कभी भी पूछ सकते हैं, राइट? तो हर चीज का हाँ अपने को एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरे कुछ इंटरव्यूज ऐसे भी गए हैं जहां पर जीरो टेक्निकल पूछा गया था, कुछ इंटरव्यूज ऐसे भी गए हैं जहां पर दम से ले ली गई थी टेक्निकल पूछ पूछ के, आप समझ रहे हो? तो एनीथिंग कैन हैपन, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। और थोड़ा सा बताओ, क्या कुछ अंदर क्या चल रहा था जब इंटरव्यू चल रहा था, और बिफोर इंटरव्यू आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि लाइक कैसा होगा, मतलब? मुझे तो लगा था कि आप डायरेक्ट सिर्फ टेक्निकल टेक्निकल पूछोगे, मैं बिल्कुल अभी तक यहाँ पे मेरे पास नोट्स पड़े हैं डीवीएमएस के, मैं एक तरफ देख ही रही, फिर एकदम से डिफरेंट, तो इट्स लाइक आप जिसके लिए प्रिपेयर्ड होते हो आप डिफरेंट सिचुएशन आ गई एंड मैंने नहीं सोचा था एंड मुझे एक एक्सपीरियंस मिल गया। मुझे लिटरली मैं बता रही हूँ 30 मिनट मैंने बोल दिया, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं सरवाइव कर पाऊंगी। तो मुझे यही चल रहा था कि प्रिपेयर जिसके लिए थी वो एकदम डिफरेंट सिचुएशन आ गई, तो देखो, आई एम वेरी लकी कि मुझे एक्सपीरियंस मिला। तो यही एंड देखो सर आई वांट टू हम्म। आस्क लाइक जैसे आपने मेरा रिज्यूमे देखा, ये मेरा अपडेटेड रिज्यूमे है, तो जब मैंने टीसीएस का फॉर्म फिल किया था तब मैंने एवी एक रिज्यूमे डाल दिया था, कोई तो इशू नहीं मुझे है, आप लगा अपडेटेड रेज्यूमे कैरी कर सकते हो। इन केस फिजिकल इंटरव्यू है तो आप उनको दे सकते हो रेज्यूमे। अब सर वर्चुअल में कैसे देंगे रेज्यूमे को? गूगल ड्राइव पे अपलोड करो, उसकी लिंक जनरेट हो जाएगी,
लिंक उनको चैट बॉक्स में, लाइक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करें या जो भी तो यूज सर करें। जैसे मैं, आपने जैसे मुझसे पूछा हाउ आर यू, तो उसी के टाइम में बोल दूं सर आई हैव माय अपडेटेड रिज्यूमे, हाँ मुझे दे, तो हाँ कोई इशू हाँ, नहीं? कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ओके। नहीं। ठीक है। और इनफैक्ट दे फील हैप्पी कि यार मतलब बंदे ने कुछ तो वर्क अच्छा। किया है, तब जाके तो अपडेट हुआ है ना उसका रिज्यूमे, ये चीज। अभी अपन फीडबैक पे बात करेंगे। देखो मॉक इंटरव्यू का यही एक बेनिफिट मिल जाता है अपने को कि यार एटलीस्ट आप अब प्रिपेयर्ड हो। अगर आपसे अब इंटरव्यू कुछ भी ऑर्थोडॉक्स पूछ रहा है इंटरव्यूअर, तो एटलीस्ट यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ इट, राइट। अच्छा, अब फटाफट से ना सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रेज्यूमे की। रेज्यूमे बहुत शानदार बना हुआ है। सबसे पहली बात तो मैं अभी तकरीबन तकरीबन 16-17 इंटरव्यूज ले चुका हूँ, एंड जो टेम्पलेट आपने यूज किया है उसमें अप्रोक्सीमेटली 16 में से 8 या 9 आई थिंक सेम टेम्पलेट पे हैं। तो देखो क्या होता है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब यार रेज्यूमे सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। आपका रेज्यूमे है, तुमको कहीं से भी टेम्पलेट चुराना नहीं है। सिंपल वर्ड पे बनाओ, खुद डिजाइन करो अपने रेज्यूमे, पॉइंट नंबर 1। बिकॉज इट शोज कि आप अपने रेज्यूमे के टुवर्ड्स डेडिकेटेड हो, राइट, है ना। बिकॉज ये आपकी यस। खुद की चीज है। अगर आप अपने खुद की चीज पर डेडिकेटेड नहीं हो सकते, तो कंपनी तो किसी और की, आप कैसे डेडिकेटेड रहोगे। समझ रहे हो ना, यूर गेटिंग माई पॉइंट। तो यस कभी सर। भी अपने को ये कॉपी नहीं करना गूगल से टेम्पलेट, पॉइंट नंबर 1। ओके। पॉइंट नंबर 2 विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, कि जब भी आप करियर ऑब्जेक्टिव लिखो, बहुत अच्छा लिखा है, बस लास्ट में एक लाइन ऐड करो। आपका जो करियर ऑब्जेक्टिव है वो कंपनी की टैगलाइन से मेंशन अगर हो जाए, बहुत कम लोगों को ये बात पता है, लेकिन एक 4 चांद लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस में एक्सपीरियंस सर्टेनिटी उनका टैगलाइन है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, आई वांट टू वर्क विद अ कंपनी वेयर आई कैन एक्सपीरियंस सर्टेनिटी। एकदम सिमिलर मत लिखो, वेयर आई कैन एक्सपीरियंस सर्टेनिटी तो एकदम बिल्कुल सेम हो जाएगा। आप क्या लिख सकते हो, वेयर आई कैन वर्क विथ सर्टेनिटी एंड वेयर आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ एंड वर्क टुवर्ड्स द मतलब डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो, है ना। तो अब क्या होगा सर, हर कंपनी के लिए रेज्यूम चेंज करना है? नहीं, केवल ये लाइन चेंज करना है। इन्फोसिस की टैगलाइन कुछ और होगी, तो वहां पर आप कुछ और यूज कर सकते हो, है ना। इससे एटलीस्ट पता चलता है कि यार आप कंपनी के लिए रिज्यूम प्रिपेयर करके आए हो। प्लस जब भी आप कॉलेज का नाम लिखोगे, लोकेशन मेंशन करना बहुत जरूरी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको यहाँ पर आपकी ब्रांच नहीं मेंशनड है रेज्यूमे में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, ये मेंशन करना है। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, चिंता मत करो। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। स्कूल में थोड़ा सा ये क्लैरिटी रखो। मैंने तो एटलीस्ट पूछ लिया, कुछ इंटरव्यू और इसको एज्यूम कर सकते हैं कि आपने गैप किया है, बिकॉज 10th में आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड 2016 लिख दिया, 12th में आपने ड्यूरेशन लिखा, और विच इज अ 2 ईयर ड्यूरेशन। आइदर आप सिर्फ 2018 लिखो, या तो आप 1 साल का ड्यूरेशन करो उसको। ठीक है। अब ये जो हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट है ना, ये जो जावा स्क्रिप्ट और सर्वलेट पे बनाते हैं, ये हर दूसरा इंजीनियर बना के जाता है ना। तो अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उनको घंटा नहीं पता चल रहा है क्या बनाया, लेकिन आपको नाम चेंज कर दो यार इसका, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन नेम। तो चीज वही है, बट नाम अपन उसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, बाकी सब बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। ठीक है। और उसके बाद हाँ, यहाँ पर आपने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में लिखा है mentors with other students learned different soft skills, नहीं learned different soft skills होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा अपन को ग्रामर वाला पार्ट पे ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सब हाँ, एक चीज ये बिल्कुल हटा देना, ये जो इंटर्नशिप्स आपने दोनों में प्रेजेंट लिखी है, दिस डजंट साउंड अ हाँ। गुड इम्प्रेशन कि यू आर वर्किंग साइमल्टेनियसली एट 2 प्लेसेस। तो आप झूठ लिख दो, आप एक एक को टर्मिनेट कर दो कि लाइक मैंने 2020 से 2021 तक टीसीएस में किया, फिर 2021 से 2022 तक या प्रेजेंट तक मैं कोड क्वेश्चन में कर रहा हूँ। झूठ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड मेडलिस्ट अगर मैं हूँ मैथमेटिक्स ओलंपियाड में, तो कब हूँ ये लिखना बहुत जरूरी है। और हमेशा ध्यान रखो, देखो जिस व्यक्ति के पास रिज्यूम में कुछ लिखने के लिए नहीं है ना, वो अपने 10th 12th या उसके पहले के अचीवमेंट्स लिख दे, समझ आता है। बट आपके पास ऑलरेडी इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, तो 10th 12th या उसके पहले मत जाओ, सिर्फ इंजीनियरिंग टाइम के अचीवमेंट लिखो। तो अगर इसको हट देखो, अब वही पॉइंट आया, मैंने इस पे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, आपको याद भी नहीं था कि विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि हमको सब्जेक्ट ही याद नहीं थे। समझ रहे हो आप, है ना। हाँ। को चाहो तो आप हटा सकते हो। देखो क्या होता है ना, मैं 9 इंटरव्यूज दे चुका हूँ और इतने इंटरव्यूज ले चुका हूँ, तो एक अपन ना माइंड रीडिंग सीख जाते हैं एक समय के बाद।
तो आपके अंदर मन में क्या क्या चल रहा था और आप क्या क्या बोल रहे थे, वो दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहा था। और मैं तो चलो फिर भी, मतलब मैं अपनी लाइफ में मैंने 200 इंटरव्यूज करीब लिए होंगे, बट जो इंटरव्यूअर लेने वाला है वो हफ्ते में 200 इंटरव्यू लेता होगा, आप समझ रहे हो? ठीक है, तो अपने बाप दादा बैठे हैं तो उनसे अपन पंगे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बाकी सब एब्सोल्युटली परफेक्ट है। थोड़ा सा इंटरेस्ट में जो आपने डांस वाला पार्ट लिखा है ना, वो लिखो इंटरेस्ट में, ताकि पता चले कि यार यू हैव अ डायनामिक एबिलिटी, है ना। बाकी रिज्यूम बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर दो तीन बातें देखो, आपके इंटरव्यू में मैं पता क्या कर रहा था, आपको अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, मुझे पता था कि यार श्रुति को अपने रिज्यूमे पे सुपर कॉन्फिडेंस है, श्रुति टेक्निकल बहुत अच्छा पढ़ के आई है, वो मैंने देख लिया था। ठीक है, आपके इंट्रो, आपको 2.5 मिनट का इंट्रो इसलिए देने को दिया था बिकॉज आपके पूरे इंट्रो में आपने टेक्निकल बातें की, तो मैं समझ गया कि यार बंदी कॉन्फिडेंस है। मैं पता क्या कर रहा था पूरे इंटरव्यू में, अगर आपने डीपली ऑब्जर्व किया या रिकॉर्डिंग आप 2-3 बार देखोगे आपको समझ आएगा, मैं बार बार आपको आपके रेज्यूमे से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था और आप जा रहे थे। आपका काम क्या है, बार बार आपको वापस खींच के लाना है। सर कैसे करेंगे ये? लेट अस सपोज मैंने कोई भी क्वेश्चन आपसे जेनरिक पूछा, है ना, घूम फिर के आ जाओ, फिर उसको जाव सी प्लस प्लस पे कुछ एंड कर दो या सी पे कुछ एंड कर दो कि सर मतलब ये ठीक है लेकिन मैंने सी लैंग्वेज पे बहुत अच्छे से कमांड की हुई है, कुछ भी तरीके से। तो स्टैक कॉन्सेप्ट आप समझते हो ना, जो सबसे ऊपर रहता है वो सबसे पहले निकलता है दिमाग में। तो मैंने सुना यार सी प्लस प्लस बोला, तो मेरे दिमाग में अब सी प्लस प्लस पे क्वेश्चन बना। तो बार बार रेज्यूम से बाहर ले जाएगा, बट अगर आपको अपने रेज्यूम पे कॉन्फिडेंस है तो वापस लेकर आओ रेज्यूम पे। एक चीज, दूसरी चीज, नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर टेल कि मुझे आगे एमटेक करनी है। सत्यवादी नहीं बनना अपन को, कभी नहीं बोलना। आप खुद सोचो, मैं आपके लिए 1 घंटा अपना डिवोट कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए 1 घंटा डिवोट कर रहा हूँ, मैं ऐसे बंदे को क्यों चूज करूंगा जो 2 साल बाद कंपनी को लात मार के निकल जाए? तो ये बिल्कुल नहीं लिखना। ऐसा बोलो उनको, सर आई वांट टू लर्न, बट मैं कंपनी के साथ लर्न करूंगी, आपकी कंपनी से सीखूंगी, है ना, और आपकी कंपनी की ग्रोथ और अपनी खुद की ग्रोथ पर फोकस करूंगी। अपनी ग्रोथ पे नहीं, अपने को कंपनी की ग्रोथ पर, खुद की, दोनों की ग्रोथ पर फोकस करना है ना। तो कभी नहीं बोलना ये चीज। मतलब आपका इंटरव्यू मैंने तो, क्योंकि मुझे लेना था इसलिए मैंने इतना ले लिया, बट आपने जब ये स्टेटमेंट बोला ना, वहीं पर आपका इंटरव्यू 5 मिनट में खत्म करके टाटा बाय बाय कर देते। तो इस बात का ध्यान रखो, कभी नहीं बोलना ये चीज, है ना। बाकी आपने बहुत अच्छा किया। कुछ आपको पूछना है मुझसे? सर मुझे पूछना है, जैसे ये प्रोजेक्ट जो मैंने लिखा है, दो मैंने उसके नीचे वाले बनाए हैं, लेकिन जो ये वाला प्रोजेक्ट है ये अभी बन रहा है, लाइक ऐसा है कि अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, थोड़ा थोड़ा ऐसा में है। तो उसके बारे में अगर बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ ले तो मैं ये बोल दूं कि यार अभी तो बोलना इनिशियल नहीं स्टेज है, में वो सही। जो चीजें अच्छा। बिल्कुल क्लियर लिखो, ब्रैकेट में लिखो इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो एटलीस्ट इंटरव्यूअर को देखो, इससे एक आपकी अच्छी इमेज भी पता चलेगी। क्या होता है, इस समय पे आके ना बच्चे प्लेसमेंट की तैयारी में लग जाते हैं, तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है ना। कंपनीज में लर्निंग ओरिएंटेड अप्रोच चलती है। तो ऐसा है कि अरे प्लेसमेंट आ गए तो हम अपने सेमेस्टर को भूल गए, प्लेसमेंट आ गए तो हम अपने प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स को भूल गए और प्लेसमेंट पर फोकस करने लगे। नहीं भाई, आप 4 साल से क्या कर रहे थे फिर, है ना। प्लेसमेंट की तैयारी डे 1 से होनी चाहिए प्रिपरेशन। तो अगर आप इन प्रोग्रेस लिखोगे तो हाँ, दे नो दैट हाँ भी श्रुति कुछ कर रही है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इन प्रोग्रेस लिखो। बाकी और कुछ, बाकी देखो रिज्यूम बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है, टेक्निकल नॉलेज भी नो डाउट वेरी गुड है, बट इतना थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, 2-3 जो मैंने बातें बताई। एंड इंटरव्यूअर 100% आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, है ना। हमको उसको मतलब लड़ना नहीं है उससे पहले तो, और ना उससे बहस करनी है, और ना अपनी बातों में फंस जाना है। कई बार ऐसा होता है, हम अपनी बातों में, आपका सिर्फ एक स्टेटमेंट आपके इंटरव्यू की पूरी डायरेक्शन चेंज कर दी, जहां पर आपने बोला कि मुझे कंप्यूटर साइंस में इंक्लिनेशन है और मुझे इन डेप्थ क्या चलता है कंप्यूटर साइंस में वो जानने की जरूरत है। तो उसमें फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे पहुंचे, वहां पहुंचे, और पूरे इंटरव्यू का फ्लो चेंज हो गया। तो एक एक वर्ड, स्पेशली जो फर्स्ट
1 मिनट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इतने अच्छे से प्रिपेयर करो। मॉक इंटरव्यू के कोर्स में आई थिंक आपको वीडियो मिलेगी भी, इस कोर्स में होगी एक, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एक एक चीज बताइए, उसको देखना जरूर, ठीक है। तो एक सर सेकंड, हाँ हाँ। लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो मेरा ग्लासेस है इसमें ब्लू रिफ्लेक्शन है, तो इससे कोई इंटरव्यू में कुछ दिक्कत होगी क्या फिर? जी नहीं। डजेंट मैटर, बस हाँ एक दो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ इंटरव्यू में। वन इज इफ योर बैकग्राउंड कैन बी प्लेन तो इट विल बी गुड, बिकॉज दिस गेट इज नॉट लुकिंग वेरी गुड, है ना। अगर प्लेन हो सकता है, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, पावर बैकअप रखना है ना, ये बहुत जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेटवर्क बैकअप रखना है। सपोज आप जियो यूज कर रहे हो तो एक आध एयरटेल वगैरह की सिम अपने साथ एज अ बैकअप रखो, है ना। और ड्रेसअप ऊपर ही नहीं, कई बार क्या होता है वर्चुअल इंटरव्यू में ऊपर ड्रेसअप कर लिया, नीचे शॉर्ट्स पहने, चड्डे पहने, खड़े होके भी दिखवा लेते हैं। देयर हैव बीन केसेस, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो प्रॉपर पहनना है विथ शूज जैसे आप जाते हो, राइट। और इफ पॉसिबल वियर अ टाई। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज 100 में से केवल 20 बच्चे टाई पहनते हैं और जंग ही 100 में से 20 में आने की है ना। तो प्लीज वियर अ टाई पॉसिबल, राइट। बाकी सब और कुछ? नहीं सर, वॉइस वगैरह वाज ओके, क्लैरिटी ऑफ माय वॉइस। एवरीथिंग परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, और आप बहुत अच्छा करके आओगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखो, आप जो भी चीज बोल रहा है ना, थोड़ा सा घबराहट होती है, बट देखो जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं खुद ट्रैप में तो नहीं जा रही हूँ, है ना। बी ऑनेस्ट, जो भी है बी ऑनेस्ट एंड बी नेचुरल, है ना। ठीक है, कुछ भी आप इंटरव्यू में झूठ बोलोगे अपने आप नर्वसनेस आएगी आपके अंदर। भाई मैंने 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़े, मैंने एक पढ़े हैं, ठीक है एक पढ़ा है, लेकिन आप पूछ लो उसमें से जो पूछना है ना। ठीक है। और रेज्यूमे में भी आई वुड से कि यार इतना जो आपने सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, इसको बोलते अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। बिकॉज आप इंटरव्यूअर को पूरी लाइबिलिटी दे रहे हो कि भाई पूछ लो कुछ भी, आप समझ रहे हो। ये जो आपने 10 लिखे हैं, 11 लिखे हैं, आई थिंक आप 5 कर दो इनको रिड्यूस करके, बट जो भी लिखो बहुत अच्छा। मैंने अपने रेज्यूमे में सिर्फ C++, जावा एंड डीबीएमएस 4 सब्जेक्ट लिखे थे, दैट्स इट। लेकिन आप पूछ लो मुझसे, नॉर्मलाइजेशन पूछा, मैंने 12 मिनट में नॉर्मलाइजेशन समझाया उसको, और बाद में बोला कि भाई पूछो ना और कुछ पूछना है, वो बोला भाई ठीक है समझ गए, है ना। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ मॉक इंटरव्यू। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। यदि आप भी अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही है, मॉक इंटरव्यू बाय यशजन सर। जाकर के अपना मॉक इंटरव्यू जरूर से शेड्यूल कराएं, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया और क्या क्या आपके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।